Hello students, this is our 15th chapter Biodiversity, Conservation and Environmental Issues. So in the previous part of the video we were discussing about, first we have discussed about the word biodiversity. We have discussed that with respect of what the species are divided. We have learned that size, shape, color, form, mode of nutrition, type of habitat, reproduction, motility, duration of life cycle, span, etc. Then coming to the next, we have learned about definition of biodiversity. Then we have done that biodiversity that we see today is the outcome of over 3.5 billion of years of revolutionary history, mainly influenced by the natural processes and played by influence of humans. Then we have completed with the levels of biodiversity. In that, first we have completed genetic biodiversity, then species biodiversity, then ecological diversity. In this part of the video we will study about the patterns of biodiversity. What are the patterns of biodiversity? Mainly there are two patterns: wise latitude and altitude gradient, and species area relationship. So in this part we will study about the patterns of biodiversity. That are two patterns, एक है altitude, एक है latitude gradient, and species area relationship. Then moving to the next slide, first we will study about latitudinal and altitudinal gradient. Okay students. Biodiversity bearing arid, semi-arid and aquatic habitat show altitudinal and latitudinal gradient. This is the introduction part. Moving towards what is latitude and what is altitude. Latitudinal means what? Ecological studies have revealed that the distribution of diversity is not uniform around the globe. Species richness exhibits latitudinal gradient for many plants and animals. If not all, it has been observed that species richness is higher at lower latitudes and there is a steady decline towards the pole. So students, we were studying about latitudinal. Ecological studies have revealed that the distribution of the diversity is not uniform around the globe. हमारी पूरी डाइवर्सिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो यूनिफॉर्मली नहीं हुआ है. इट मीन्स कि वो हर एक प्रॉपर वे में नहीं हुआ है. स्पीशीज़ रिचनेस exhibits latitudinal gradient for many plants and animals. It has been observed that species richness is high at lower latitude. Lower latitude में उनका richness मतलब उनकी अच्छी productivity है वो high है, and there is a steady decline और थोड़ा सा decline मतलब कम richness है towards the pole. यह है latitudinal gradient. Then factors like all over stability of tropical region for millions of years, lesser climatic changes throughout the year, and availability of plenty of sunlight that favored speciation. Tropical areas have less often experienced drastic disturbance like periodic glaciations observed at poles. What we have studied कि आफ्टर फैक्टर्स, जैसे हमने ये सारे फैक्टर्स देखे तो ये सारे फैक्टर्स एक स्टेबिलिटी में हेल्प करते हैं. फिर उसके बाद जो ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं हैव लेस ऑफ्टेन एक्सपीरियंस ड्रास्टिक डिस्टर्बेंस लाइक periodic glaciations around the pole. Such a stability over millions of years
might have favored speciation. ये जो स्टेबिलिटी हुई है, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि 3.4 मिलियन ईयर्स लगे ये डाइवर्सिटी को बनने में. तो सच अ स्टेबिलिटी ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, ये जो स्टेबिलिटी हुई है जो मिलियन ईयर्स से चल रही है, इसी के वजह से हमारा आज स्पीशीज़ बना है, जो स्पीसिएशन बना है वो बना है. Lesser migration in tropics might have reduced gene flow between geographical isolated region and favored speciation. Scientists also have considered availability of more intense sunlight, then warmer temperatures, higher annual rainfall in tropics as factor responsible for bountifulness of this region. In more or less constant climatic conditions and abundance of resources, some animals enjoy food preferences. Animals को food preferences होते हैं कुछ animals के, because of climatic conditions and abundance of resources. Resources ज़्यादा available है और climatic condition भी उसके हिसाब से more or less है. For example, fruit being available throughout the year in rainforests, variety of frugivorous organisms is obviously more as compared to the temperate regions. Clear with this? ये हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं? हम लोग we have studied about latitudinal. Now moving forward, in short, species richness or diversity for plants and animal decreases. इनकी diversity decrease हो रही है as we move away from the equator to the pole. जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल के पास जाते हैं तो it is maximum in tropical rainforest. Tropical rainforest में maximum है. Example, Amazon rainforest 40,000 plants है उधर, 1300 birds है and 427 mammals है और total 3000 species है. This is all about latitudinal. Coming to the next है हमारा altitudinal. Altitudinal means what? It speaks for the height from mean sea level upwards. Species diversity is more at lower altitudes than at the higher altitudes. ये किसके बारे में बात करता है? altitude heights के बारे में बात करता है. तो जो स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी है वो लोअर एल्टीट्यूड पे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हायर एल्टीट्यूड. इट इज़ बिकॉज एट हायर एल्टीट्यूड्स changes in the climatic condition and drastic seasonal variations lead to the decrease in the species diversity. ये सब की वजह से क्या होता है? जो हमारी स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी है वो चेंजेस आता है उसमें. It is because at higher altitudes change in the climatic condition and drastic seasonal variation lead to the decrease in the species diversity. Moving to the next slide. सेकेंड, हम लोग ने अभी altitude और latitudinal gradient के बारे में पढ़ लिया. Now comes सेकेंड पार्ट जो है स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप. स्पीशीज़ और एरिया रिलेशनशिप क्या है? लेट्स सी. साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप्स बिटवीन स्पीशीज़ डाइवर्सिटी एंड द साइज ऑफ द हैबिटेट. इट इज़ कंसिडर्ड दैट, फर्स्ट हम लोग इसको थोड़ा बॉर्डर करते हैं. Scientists have tried to establish relationship between species diversity and size of habitat.
It is considered that number of species present is directly proportional to the area. जितने भी number of species होंगे वो directly proportional होंगे to the area. It is understood that larger area may have more resources. जितना large area होगा उसके पास resources भी उतने ज़्यादा होंगे. And that larger area that can be distinguished amongst the inhabitant species. Does this always hold true? क्या पूछ रहे हैं? Does this always hold true? जर्मन नेचुरलिस्ट अलेक्जेंड्रा वन, इसने क्या किया है? Humboldt observed that, उसने ऑब्जर्व किया that species richness does increase with the increase in area. जितना ज़्यादा स्पीशीज़ का एरिया होगा उतना ही स्पीशीज़ का रिचनेस भी इंक्रीज होगा, बट अप टू अ लिमिट. ऑब्जर्व द ग्राफ फॉर स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप. For many species, this curve is a rectangular hyperbola. If we consider S to be species richness, A as area under study, C as the y-intercept and Z as the slope of the line, this relationship can be considered by the equation log S equals to log C plus Z log A. On logarithmic scale, this relationship is a straight line. We have to remember this point. logarithmic scale पे ये relationship एक straight line जैसे बन के आती है, या ऐसी whatever. For smaller areas, value of Z ranges from 0.1 to 0.2 0.1 to 0.2 regardless of species or region under study. Z क्या है? Z is the slope of the line. But no longer areas like the entire continent slopes are closer to vertical axis. This is true. That is steeper. This observation indicates that in very large areas, number of species found increase faster than the area explored. जितना नंबर ऑफ एरिया ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा स्पीशीज़ भी मिलेंगे, क्योंकि उनका जो एरिया है वो ज़्यादा जल्दी एक्सप्लोरेड होता है, मतलब उधर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होती है. सो कमिंग टू द डायग्राम, ये डायग्राम है ग्राफ शोइंग स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप्स. ये है स्पीशीज़ रिचनेस, ये है एरिया, दिस इज़ लॉग स्केल, ये है अपना टर्निंग पॉइंट, ये है सी एस इक्वल्स टू सी ए जेड, लॉग एस इक्वल्स टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए. क्लियर विद दिस? देन importance of species diversity to the ecosystem. What is the importance? To understand okay, what is the importance of species diversity to the ecosystem. Like ये species की diversity होना क्यों important है? Let us now understand whether we really need all the diversity around us. What if few diversity are lost permanently? क्या हमें सारी डाइवर्सिटी जो हमारे अराउंड में है, हमारे सराउंडिंग में है, क्या वो हमें सारी डाइवर्सिटी की ज़रूरत है? या इफ़
few species are lost permanently, तो हमें इफ़ेक्ट होगा या नहीं होगा? This is the question. Then see the answer to this question. A community is said to be stable if average biomass production remains fairly constant over a period of time. If what? अगर ये जो average biomass production है it remains fairly constant, अगर ये constant रहता है over a period of time, it should be strong enough to withstand disturbance and recover quickly. इसे इतना स्ट्रॉन्ग होने चाहिए हमारी कम्युनिटी को कि वो अकेला ही खड़े हो सके एंड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, और अगर उसे कुछ हो गया तो वो अपने आप की रिकवरी भी बहुत क्विकली करे. It also must be resistant to invasive species. David Tillman carried out various field experiments and proved that species richness does help the stability of the ecological community. Rich diversity leads to lesser variation in biomass production over a period of time. This is called productivity stability hypothesis. ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है व्हाट इज़ प्रोडक्टिव स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस. तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है. ये पैराग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है. दिस पैराग्राफ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. Paul Ehrlich, an ecologist from Stanford, gave an analog to explain significance of diversity. It is called Rivet-Popper hypothesis. He compared aeroplane to ecosystem and the species as rivets that keep all parts of the airplane together. Clear with this? Of course, there are thousands of rivets needed to hold all the parts of the airplane together. जैसे हर एक पार्ट एक एयरप्लेन को चलाने में हेल्प करती है, वैसे ही हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें भी हर एक पार्ट इम्पॉर्टेंट है. If each passenger decided to pop even one rivet in the other word, a species that get extinct initially, not much of the turbulence will be experienced but slowly. As rivets will increase, there will be a serious threat to the safety of the aeroplane. Also, which rivets are removed will also matter. Clear with this? Moving to the next slide. Suppose rivets at a key position, such as the ones that bind the wings to the body of the airplane, are removed. अगर उसके wings को ही remove कर दिए, situation will become serious. Situation क्या होगी? एकदम serious और critical होगी. Thus we can say that अब हम लोग क्या बोल सकते? Thus we can say that relationship between diversity and well-being of ecosystem is not linear. इन दोनों के बीच की जो डाइवर्सिटी है वो लीनियर नहीं है. Thus we can say that relationship between diversity and well-being of ecosystem is not linear. But it is certain that loss of species may not pose threat to the ecosystem. अगर species का loss होता है तो उसकी वजह से ecosystem को कोई threat face नहीं करना है, only initially.
Loss of key species will certainly cause threat in a very short span of time. अगर की species जो है अगर लॉस हो गए तो उसके वजह से हमारी पूरी कम्युनिटी को, हम सबको कोई ना कोई थ्रेट उठाना पड़ेगा इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम. इट विल अफेक्ट फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी फ्लो, natural cycle, etc. In short, it will affect the whole balance of ecosystem. Clear with this? Going to the next slide. Now we will study about biodiversity current scenario. करंट में बायोडाइवर्सिटी का सिनेरियो क्या है? Then, how many species do really exist on Earth and how many of them are found in India? It is difficult to come to consensus about the exact कितने स्पीशीज़ अर्थ पे बॉर्न हुए थे एंड कितने स्पीशीज़ आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंट्रीज़ में या आउट ऑफ आर इन कंट्री दैट इज़ इंडिया में बॉर्न हुए थे. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम टू कंसिक्वेंसेस. कोई भी रिज़ल्ट पे आना इज़ नॉट गुड अबाउट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ लुक टुडे. कितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ हमारे अर्थ में अभी फ़िलहाल प्रेजेंट है? दो over 1.5 million species have been documented as per NUCN data 2004. So far we are yet to study let more than this. We are also aware about speciation process that might have continued. Most of the studies have been carried out as temperature in temperature processes. Then most of the studies that have been carried out are in temperate regions. Then tropical rainforest major diversity hubs are yet to be explored completely. Some exorbitant numbers like existence of 20 to 50 million varieties have been made, but Robot May has given convincing situation of about 7 million species around the world. Then, but Robot May has varieties have been made. As I told you कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे varieties के हैं. So we have to observe the given big charts and find out the relative share of various plant and animal group in the existing knowledge of biodiversity. तो ये था all about biodiversity. ये है species showing a species that is the known species of organism, जहाँ पे पिंक वाला पार्ट इज़ फंगी, ग्रीन वाला इज़ प्लांट एंड येलो इज़ 1,80,000 species have given you the platelets. then known species of animals है ये. उसके बाद known species So students, we have seen the diagrams and we do not find any data of prokaryotes. Several Menaron species are not cultivable under laboratory conditions. बहुत सारे species cultivate नहीं होते हैं because of the laboratory condition. Also, conventional taxonomic methods are not suitable for identification for prokaryotic species. Then India boasts a handsome share of 8.1%
of total biodiversity wealth of the earth. One of the 12 mega diversity countries of the globe, India has 2.4% of total land area of the world. We have identified around 45,000 plant areas and nearly double the number of animal varieties from our natural wealth. If we consider Mies estimate of global diversity, we may have recorded only 22% of our natural wealth. This situation underlines the need of taxonomists, the study of biodiversity, but major concern is the possibility of loss of these varieties before we identify them because of activities like reclamation and deforestation. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये बहुत ही सिंपल सा पार्ट था, जस्ट एन इंट्रोडक्शन पार्ट. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. लॉस क्या हो गई है बायोडाइवर्सिटी? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लीड्स टू द ओवरऑल इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम. कुछ भी अगर इकोसिस्टम में इम्बैलेंस होता है तो वो मिला के हम लोग लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ही बोलते हैं. The chief serious aspect of loss of biodiversity is extinction of species. Extinction means ख़त्म हो जा रहे species. Chief serious aspect है, ये बहुत ज़्यादा expect seriously animals को बचाना चाहिए. Loss of biodiversity में we are saying कि loss of biodiversity में extinction होता है species का. There are 3 types of extinction: wise natural extinction, mass extinction and man-made extinction. कौन से 3 टाइप के एक्सटिंक्शन होते हैं? नेचुरल एक्सटिंक्शन मतलब नेचुरली चीज़ें ख़त्म हो जा रही है. मास एक्सटिंक्शन एंड द थर्ड इज़ मैन मेड एक्सटिंक्शन या उसको एंथ्रोपोजेनिक भी बोलते हैं. डैमेज टू बायोडाइवर्सिटी टेक्स प्लेस ड्यू टू बोथ natural and man-made reasons. Natural reasons include forest fires, earthquake, volcanic eruptions, etc. Man-made reasons on habitat destruction, hunting, settlement, over exploitation and reclamation, etc. Then moving to the next slide. We are aware of 5 mass extinction during various stages of history of Earth. For example, Ice Age. The current loss of biodiversity is considered to be the 6th extinction, which is progressing at an alarming rate, which is estimated to be 100 to 1000 times faster than pre-human times. मतलब सबसे ज़्यादा आज के ज़माने में बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है. 100 से 1000 से 100 हो जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्विक हो रहा है. इकोलॉजिस्ट ब्लेम दिस टू ह्यूमन इंटरवेंशन इन नेचुरल हैबिटेट. इकोलॉजिस्ट वुमेन को इंटरैक्ट करते हैं, उन्हें मारते दौड़ते हैं. द ह्यूमन इंटरैक्शन इन नेचुरल हैबिटेट, दे डू नॉट फॉरगेट to warn that if the current trade continues, we might lose about 50% of diversity. अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग हमारी 50% ऑफ डाइवर्सिटी को पीछे छोड़ देंगे. Then loss of biodiversity in any area can lead to the decline in plant production. अगर कोई लॉस हो रहा है डाइवर्सिटी में तो उसके वजह से क्या होगा? पूरे प्लांट प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाएंगे एंड दैट कैन लीड टू द डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन ऑल्सो. Then I'll repeat, loss of biodiversity in any area can lead to the decline in plant production, lower resilience to environmental disturbance like flood. It may also lead to alteration in environmental processes.
हमारे इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस में भी उसका बहुत ज़्यादा हाथ है। वो अल्टर करता है, मतलब कुछ चेंजेस करता है, जैसे लाइक डिज्नी साइकिल्स, प्लांट प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा। दिस पैराग्राफ इज़ इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स। मैं क्विक रिव्यू दे देती हूँ, अंडरलाइन करो। वी आर अवेयर ऑफ 5 मास ड्यूरिंग वेरियस स्टेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ. The current loss of biodiversity is considered to be the sixth extinction, which is progressing at an alarming rate, which is estimated to be 100 to 1000 times faster than pre-human times. Underlying this point, ecologists blame this to the human intervention in natural habitat. नेचुरल हैबिटेट में ह्यूमन घुसते हैं तो इकोलॉजिस्ट ह्यूमन लोगों को ब्लेम करता है। दे डू नॉट फॉरगेट टू वार्न दैट इफ़ द करंट ट्रेंड कंटिन्यूस, अगर ऐसे ही हम लोग मारते रहेंगे तो हमारे पास से हर एक डाइवर्सिटी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी in any area can lead to the decline in plant production, lower resistance, resilience, then to the environmental disturbance like flood. फिर उसके बाद it may also lead to in environmental processes like disease, cycles, plant productivity, etc. Going to the next cycle. So students, we will end this video here at the loss of biodiversity. We will study about the causes in the next part of the video. I hope you understand everything. This chapter is very easy, very theoretical. You just have to remember the things. So thank you a lot students. Goodbye.